Assalamu alaikum and welcome back to the Blackbeard English Linguistic and Literature. Today we are going to learn about 44 English sounds or phonemes. So, what is phoneme? Basically, phoneme is the smallest unit of sound within oral word. We have 44 phonemes in English language. When we are having 44 sounds or phonemes, at the same time we have 26 letters in English. So sometimes phonemes match up to the spelling and sometimes not. For example, here we have a word dog that has three letters and three sounds like d, o, and g. But if we look at the word beast, it has four letters but three sounds like b, e, and t. So it doesn't matter that phonemes are equal to the letters or not. After those in 44 English phonemes, we have 24 consonant sounds or phonemes and 20 vowels phoneme. In those 20 vowel phonemes, we have 12 monophthongs and 8 diphthongs. To put it simply, a monophthong is a single vowel sound and diphthong is a double vowel sound. A monophthong is where there is a one vowel sound in a syllable and a diphthong where there are two vowel sounds present in a syllable. So मोनोथोंग्स और डिफ्थोंग्स ये वाउल्स की साउंड्स हैं. मोनोथोंग 12 है, डिफ्थोंग 8 है एंड मोनोथोंग जो है वो सिंगल वाउल साउंड है, डिफ्थोंग डबल वाउल साउंड है. So today we are going to learn about only 24 consonant sounds because these are much more important than vowel sounds. अगर आप इनको अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आपकी प्रोनाउंसिएशन का मसला बहुत हद तक बेहतर हो जाएगा. यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक ए नेटिव. और जो स्पेलिंग का मसला है, मोस्ट ऑफ द टाइम जब हमारी प्रोनाउंसिएशन ठीक होती है तो हम स्पेलिंग्स को भी अच्छी तरह से याद कर सकते हैं. सो वी हैव a table here. First of all, here is p sound. p. इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो इन लाइंस में जिनको हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शंस कहते हैं, दो लाइंस होती हैं तिरछी, इनमें जब भी कोई लेटर आएगा तो उसे हम अल्फ़ाबेट नहीं कहेंगे, उसे हम साउंड या फोनीम कहेंगे. सो प पिट, ब बिट, ट टैब, ड डैब. Next we have k sound, cab, cat, then g sound, gab, good, then f sound, fan, friend, full, v sound, van. So इस चीज़ का ख्याल रखना कि वी का जो साउंड है और जो डब्ल्यू का साउंड है इसमें कुछ डिफरेंस है जो मैं आपको बाद में समझाऊंगा on the end of this lecture. Next we have s sound, sa, sad, sorry. Again we have z sound, zoo, zoo, m sound, man, men, many, morning, n sound, not, naughty, nothing. So in this way we have her sound जो कि ग्लॉटल साउंड है, हम हलक से निकालते हैं आवाज़ डायरेक्ट. ह, her sound, hot, heavy, high, l sound, lead, ladder, less, large, r sound, red, right, run, w sound, wed, web, warning, th sound. So this is th sound. आपने इसके ऊपर गौर करना है. दिस इज़ लाइक थीटा. इसका जो सिंबल है आपने इसको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है. ज़ीरो लिखने के बाद उसको हाफ कट कर दें तो लाइक डैट. दिस इज़ थ साउंड, थॉट. नेक्स्ट वी हैव द साउंड, them, that, there. Again we have sh sound,
On the 19th number, sh, shy, shy. तो थ साउंड से लेके एंड तक आपने सिंबल्स को जहन नशीन रखना है, इनको गौर से जहन में डाल लें. देन वी हैव ये साउंड श, treasure, player. अगेन वी हैव च साउंड. त और श साउंड जो है इसको जब हम मिक्स करें तो वी विल गेट च साउंड. चिन, चिम, change, check. Next we have j sound. If we mix d and j sound, it will give us j sound. Jam, jump. Y sound, y, y. Y का जो साउंड है वो है, और ये सिंबल J की तरह का है. दिस इज़ नॉट ज, दिस इज़ ओनली ए सिंबल, एंड साउंड जो इसकी है वो य की है. यम, yummy, year. Next we have ing sound. ing, ing. ing की जो साउंड होती है, जो हम नेजल साउंड है, नाक से निकालते हैं, नोज से. sing, swing, changing, morning. So this if you look at this line, यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, अगर आप गौर से देखें यहाँ पे साउंड्स को डिफ्रेंशिएट किया गया है. मिसाल के तौर पे फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव बाइलेबियल साउंड्स. बाइलेबियल साउंड्स ऐसे होते हैं जो हम होंठों को टच करने से प्रोनाउंस करते हैं. प, ब, म, हुआ. लाइक वुड, मैन, बेबी, स्पाई. अगेन लेबियोडेंटल हैं, फ और व. वेरी, फॉल, वेरी, फॉल. Next, th sound. These are dental sounds. Thought, breathe. Next, we have alveolar sound. T, d, s, z, n, r. Top, dead, said, zebra, butter, knob, light. Next, we have r, sh and j sound. ये पोस्ट एल्वेलर है. सो पोस्ट एल्वेलर वो है जब आप अपनी टंग को अपनी तालू के जो सामने वाले अपर ऑफ अवर माउथ जो पार्ट है उससे आगे दांतों से थोड़ा ऊपर का एरिया, उसे पोस्ट एल्वेलर कहते हैं. उस पर टच करते हैं. लाइक र साउंड, रेड, शुड, एशिया, एशिया. नेक्स्ट वी हैव ये, यस, ये साउंड which is platal. Next we have vowel sound. K, k, ing. Cat, go, sing. Next we have glottal sound जो गले से डायरेक्ट निकलता है. ह साउंड, हैप्पी. सो इनको पॉइंट आउट भी किया गया कि हम आवाज़ कहाँ कहाँ से निकालेंगे, माउथ के किस किस एरिया को टच करने से कौन कौन सा वर्ड निकलता है. सो दिस इज़ द टेबल. इफ़ यू लुक एट दैट, यहाँ पे कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो वॉइस हैं और कुछ जो हैं वॉइसलेस हैं. लाइक प इज़ वॉइसलेस एंड ब इज़ वॉइस्ड. वॉइस और वॉइसलेस में क्या फ़र्क है? वॉइस साउंड वो होते हैं कि जब आप उनको प्रोनाउंस करें तो आपका जो एडम्स एप्पल है, आपका वॉइस बॉक्स, जिसको गले में जहाँ से आवाज़ निकलती है वो वाइब्रेट करे. लाइक ब पे वाइब्रेशन आती है, बट ऑन द प साउंड वी डोंट फील लाइक वाइब्रेशन. तो इसी तरह तमाम है. स्टॉप्स वो होते हैं जिसमें जिनको प्रोनाउंस करने के बाद हवा का प्रेशर रुक जाए. लाइक प, ब. फ्रिकेटिव्स जो हवा के हल्के से प्रेशर से निकले. एफ्रिकेट्स जो हवा के ज़्यादा प्रेशर से निकले. च, ज. नेक्स्ट नेजल्स जो हैं जो आपकी नोज से जिनकी आवाज़ निकल रही हो. म, न, इंग. लाइक लिक्विड्स हैं लाइक ल एंड र विदाउट एनी फ्रिक्शन, विदाउट द फ्रिक्शन ऑफ एयर. जब ऐसा कोई साउंड निकले तो वो लिक्विड कहलाता है. देन ग्लाइड, ग्लाइडल साउंड्स हैं. ग्लाइडल उन साउंड को कहते हैं जिनको प्रोनाउंस करते हुए आपकी जो टंग है वो ग्लाइड करे. लाइक वेव्स, वाओ, वाओ, व साउंड. So while pronouncing word sound, you will feel that your tongue is gliding in your mouth. So
जस्ट लाइक व या इज सिमिलर टू द व, सो हम इनको ग्लाइडल या ग्लाइड साउंड्स कहेंगे. सो इफ यू अंडरस्टैंड ऑल दिस टेबल, इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू. ये प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन इस पे लिखे हुए हैं एंड इट वुड हेल्प यू अ लॉट इन अ लॉन्ग वे. आपकी प्रोनाउंसिएशन एंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके स्पेलिंग का जो मसला है वो काफ़ी हद तक हल हो जाएगा. सो दिस इज़ द वे टू टेल द एड्रेस. सो हियर द एरिया एंड आपके जो तमाम चीज़ें हैं प्रोनाउंस करेंगे वो इसके अंदर है. So all these were the consonant sounds, and I hope you understand by looking at the words and at the chart that is given. So this is quite easy for you to understand it if you understand chart along with the sound. तो ये आपके लिए बहुत easy होगा. So if you find this lecture useful for you, please subscribe the channel and don't drop your suggestion in the comment section. Share with your friend and press the bell icon. Thank you so much.